गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट टाइम I discussed with you about the Warner's theory and its limitations. Today I am going to discuss with you the IUPAC rule for naming the complexes or coordination compounds. First rule is cation to be named first followed by an ion, just like in simple ionic compounds. पोटाशियम क्लोराइड का भी क्लोराइड पोटाशियम नहीं बोलते। मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम इज कटायन, सल्फेट इज आनायन। तो हमेशा पहले कटायन का नाम, बाद में आनायन का नाम, ऐसे मैंने यहां लिखा है। ये कॉम्प्लेक्स है। पोटाशियम आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट है, पहले इसका नाम आएगा, बाद में इसका। जबकि यहाँ पे सल्फेट स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है, इसके ऊपर नेगेटिव तो इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव। इस कॉम्प्लेक्स का नाम पहले आएगा। इससे कोई लेना देना नहीं है कौन कटायन है। मतलब है अगर कटायन कॉम्प्लेक्स है कटायन का नाम, अगर नॉन कॉम्प्लेक्स पार्ट है काउंटर आयन है तो उसका नाम पहले कटायन का नाम लेना है। Then among complex ion or a complex, तो कटायन नाम दे दिया। इस कॉम्प्लेक्स में किसका नाम पहले लिख रहा है, इसके अंदर लिगेंड टू बी नेम्ड फर्स्ट फॉलोड बाय सेंटर मेटल आयन, लिगेंड टू बी नेम्ड फर्स्ट फॉलोड बाय सेंट्रल मेटल आयन। लाइक क्योंकि कॉम्प्लेक्स के अंदर दो पार्ट हैं, सेंटर मेटल आयन एंड द लिगेंड। लिगेंड का नाम लाइक FeCN6 4 नेगेटिव, तो Cn का नाम पहले आएगा, और इस केस में NH3 का नाम पहले आएगा, कॉपर का नाम बाद में लिखा जाएगा। तो ठीक है, फिर लिगेंड का नेमिंग कैसे करें। रूल्स आ चुके हैं। कटायनिक लिगेंड के केस में सफिक्स में क्या लगाएंगे, यम, नाइट्रोसोनियम, हाइड्रोजीनियम, इस ढंग से लिखा। एंड इन केस ऑफ अनायनिक लिगेंड एट द सफिक्स ओ इज एडेड। डिस्कस हो चुका है क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड में, क्लोराइडो, नॉट क्लोरो, ब्रोमाइडो, हाइड्रोक्सो, नाइट्रेटो, सल्फेटो, एसिटेटो, बाइसल्फेटो, ग्लाइसिनेटो, ऑक्सालेटो, इस ढंग से आए। एंड फॉर न्यूट्रल लिगेंड नो हार्ड एंड फास्ट रूल, अमाइन, एक्वा, पिरिडिन, इथेन 1,2 डायमाइन और इथाइलिन डायमाइन, डाइप्रिडाइल, इस ढंग से नाम दिए। तो कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है इन केस ऑफ ए न्यूट्रल लिगेंड्स। फॉर मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड्स प्रेजेंट, एक से ज्यादा सेम लिगेंड प्रेजेंट हो, तो परफिक्स में क्या ऐड होगा, लिगेंड के डाई, ट्राई, टेट्रा, डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ 2 सेम लिगेंड डाई, 3 सेम लिगेंड ट्राई, 4 टेट्रा, 5 पेंटा। जैसे इस केस में होगा हेक्सासायनाइड, और यहां पे होगा टेट्रा अमाइन। But if more than one same ligand containing some multiplex number are present, उस केस में प्रफिक्स में क्या लगेगा, तब 20 टेट्रीज,
डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ सेम लिगेंड। यह बिल्कुल क्लियर किया है। ऑक्सालेटो, इसमें कोई नंबर नहीं आया। टू लिगेंड्स आर प्रेजेंट, डाइऑक्सालेटो। बट इन EN, EN इज इथेन 1,2 डाइअमाइन, तो डिजिट आ रहे हैं बीच में डाई। इस केस में टू लिगेंड्स अगर प्रेजेंट तो 20 आए। अगर हम दूसरा नाम कौन सा इसका, इथाइलिन डाइअमाइन, तब भी डाई बीच में आए तो 20 लिखे। डाइप्रिडाइल है, डाइप्रिडाइल अगर 2 प्रेजेंट है तो उसके इसमें डाइप्रिडाइल नहीं बोलेंगे, 20 डाइप्रिडाइल। मैं यानी कि लिगेंड के नेम के अंदर ही अगर अमाइनो डाइएसिटेट, अमाइनो डाइएसिटेट डाई बीच में आ गया, अगर उस केस में अगर 2 लिगेंड है तो 20 वर्ड आएगा। यानी लिगेंड के नेम ट्राइफिनाइल अमाइन, triphenyl phosphine, if they are present 2 or 3, then bistris 4, tetrakis, etc. we will add. For different type of ligands which are present in a complex, in that case they should be named alphabetically. This is chlorido, this is cyanide, this is nitro. Both starts with C. Cyanido, chlorido. The first letter is same, the next. In this case, CH. Here CY. H and Y comparison. So that is why in this case the name is dichlorido, dicyanide, dinitro. For 3 tri, 4 tetra. For bridging ligand, add the prefix mu hyphen is added. Bridging ligand means which connects the two. Suppose on this side is metal, they are connected in the metal. In this case, mu amido, mu hydroxo. Alphabetically AH. So this is about naming of the ligand. So once the naming of ligand is completed, we have to name the centimeter line. But for a cationic or neutral complex, give name the centimeter line followed by oxidation state in a Roman numerals, just like in your classes. No another numerical system is allowed. And for an ionic complex, name the centimeter line, but in that case add the suffix at is added. Before further discussion, let us name these complexes. Roman numerals, enclosed in small bracket. Like this is the complex. First of all, we have to oxidation state of this centimeter line. पहला काम यही है, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो क्या होगा, पोटेशियम का +1 4 into +1 plus x 6 Cn का -1 equal to 0, then x is equal to +2.
ऑक्सीडेशन स्टेट पता चल गई यहाँ पे +2। कॉम्प्लेक्स अनायनिक है, नाम बाद में लिखा जाएगा, पहले काउंटर आयन का नाम लिखा जाएगा। तो क्या नाम बनेगा? पोटेशियम हो गया नाम इसका हेक्सासाइनाइड। Complex is anion at the suffix ate is added. तो ferrate in case of nickel, nickelate 2, copper, cuprate 2, platinum, platinate 2, iridium, iridate 2. तो in case of an ionic complex at the suffix ate is added. In this case, the oxidation state is +2, NH3 is neutral. X plus 0 equal plus minus 2 equal to 0, X is equal to +2. The complex is cationic, so we have to name this one first, and among this we have to name the ligand first. The name is tetraamine. Double M, copper 2 sulfate, not sulfato. The IPS rules are meant for this part. This is outside. In this case, we will name it as usual. In simple ionic compounds. In the same way here, this is counter ion. We will not write tetrapotassium. We have to be careful in this case. IPS rules are meant for this one. The same way, cobalt, NH3 twice, H2O twice, Br, Py, SO4. Suppose this is the complex. NH3 is neutral, water is neutral, pyridine is neutral, then X -1, Br -1, sulfate -2 equal to 0, then X is equal to +3. The oxidation state is +3. So the IP's name is diamine, diaqua, bromido, pyridine. सभी लिगेंड्स का नाम कंप्लीट हो गया। कोबाल्ट, कोबाल्ट 3 सल्फेट, कोबाल्ट 3 सल्फेट। इस चीज से नेमिंग करनी है। Now let us take up some miscellaneous rules. In case of geometrical complex, cis is added at the prefix
if similar ligands are on same site. But trans for opposite site. And be careful, tetrahedral complexes never show geometrical isomerism. Why? Because of identical position of ligands in space. So let us take up. Therefore, there are only two possibilities are there: square planar and octahedral. So first, square planar. Complex with formula Ma2D2 A, A, B, B, A, B, so in this case, similar ligand on the same site at the perfect cis is added, and in this case, trans is added. Sometimes there are same ligands, even then show geometrical isomerism, provided they have different donor sites. Like MAB twice. A, B, A, B, A, B, B, A. Ligand is AB. On one side, donor side is A, another side is B. So the same donor side on same side. In this case, at the prefix cis is added, and in this case, trans is added. For example, glycinato. Glycinato is the ligand having its donor side nitrogen and oxygen.
platinum, NH2, CH2, OC. दोनों साइड इज ऑक्सीजन नाइट्रोजन. NH2, CH2, COO. In this case, NH2, CH2, CO. Now this is OOC, NH2, CH2, this one. The donor sides are on the same side. One negative, platinum 2 आई तो क्या बनेगा? सिस डाई ग्लाइस सीनेटो प्लेटिनम 2, प्लेटिनम 2. प्लेटिनियम में लिखना है प्लेटिनम. In this case trans, rest is same. Suppose all the ligands are different. How many geometrical isomers are possible? And in that we fix the position of one ligand and rotate rest of them. A, B, C, D. We fix A, then B, C, D. Next A, now here is B, C, D. Now three geometrical isomers are possible if all the ligands are different from each other. This is about the square planar complexes. Now let us take up the octahedral complexes. In case of octahedral complexes, like the formula is Ma2B4. All are monodentate. So if A are like this, similar ligand on same side, अगर इधर रखते तब भी आ जाए, यहाँ पे A लिख. In that case, at the prefix cis is repeated, and A are present above and below the plane. तो इस केस में ट्रांस लिखेंगे. यह भी हो सकता है ए इधर लिख दें और बाकी जगह डी भी आ जाए. Ligands are on opposite side, not on same side. Then M A2 BB twice. Ligand, bidental ligand with same donor side. Both are nitrogen, both are oxygen. Like oxalator, both are oxygen. Ethane 1,2 diamine, both are nitrogen. In that case, same principle.
A, same side. This is bidentate ligand. This is the representation for bidentate ligand. A, B. So this is cis. This is trans. Now if the formula is Na3B3, all are monodentate. In that case, A, B. Other possibilities A, B. Generally we write it as they are on same side, they are on same side. We write it as cis. But we have to prefer here FAC, and in this case MER. We have to prefer this one. FAC full form facial. Meridian. Facial, they are on same plane. They are on same plane. In this way, they are in same plane. And that is why we write it as facial, and in this case, meridian not in the same plane. This is out of the plane. Same on the other side. So we have to prefer facial and meridional. And in case of optical isomers, optical isomerism observed when they have non-superimposable mirror image relationship. In case of optical isomers, add the prefix D hyphen or plus sign hyphen, add the is added if the complexes dextrorotatory and L hyphen or negative sign hyphen is added, the complexes levo-rotator. Caution, they should have non-superimposable mirror image relationship. Mirror image relationship.
this reason, trans term would never show optical isomerism. Trans never show optical isomerism. There is a possibility in this case the mirror images are not superimposable. In this case the mirror image is, in this case the mirror image क्या बनेगा? यह बनेगा तो ये सुपरइम्पोज नहीं होंगे, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखा सकते हैं। तो नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज रिलेशनशिप होनी चाहिए। ये नहीं दिखाएगा, ये दिखाएगा। तो आपने इन सभी रूल्स को अच्छी तरह पढ़ना है, क्योंकि यही सारे नेमिंग के लिए काम आएंगे। चाहे आइसोमेरिज्म डिस्कस करना हो मुझे आगे, और चाहे मुझे नॉमेनक्लेचर्स के कुछ कंपाउंड्स के नेमिंग करनी है, तो ये सारे रूल्स पता होंगे तो आप कर पाएंगे। बुक से कुछ और भी लिगेंड्स हैं, उनका भी नाम पता होना चाहिए।